Hello everyone. Today we will discuss vocabulary section of class 8th English NCERT book from unit first. The unit name is Wit and Wisdom, chapter 3. Chapter name is Wisdom Paves the Way. Now first word is draperies. First word is draperies and synonym for this word is curtains, fabric hangings. And Hindi meaning is parde. Word is draperies. And Hindi meaning for this word is parde. And synonym for this word are curtains, fabric hangings. Use in sentence is the draperies added elegance to the room. The draperies added elegance to the room. Next word is Knappy. Next word is knappy. Synonym for this word are covering, shelter, roof-like structure. Now we repeat again. Synonym for this word knappy are covering, shelter, roof-like structure, and Hindi meaning for this is छाया, छत्र. और शरण भी बोल सकते हैं, shelter. And use in sentences we sat under the canopy for shed. मतलब हम शरण के लिए for shed सॉरी छाया के लिए हम हैं वो शरण किसी शेल्टर के नीचे मतलब शरण के नीचे बैठे छाया के नीचे बैठे शरण आश्रय. नेक्स्ट वर्ड इज grievance. Next word is grievance and synonyms for this are complaint, injustice, resentment. Now we repeat again. Complaint, injustice, resentment. Resentment. And जो हिंदी मीनिंग है इसके लिए वो है शिकायत. And used in sentence is he filed a grievance against unfair treatment. He filed a यहाँ पे एल भी आएगा. He filed a grievance against unfair treatment. Next word is accusations. Next word is accusations. And synonyms for this word are charges, claim, allegation. Synonym for this word are charges, claims, allegations. Hindi meaning for this word is आरोप and used in sentences the accusations were false and baseless. Now we repeat again. The accusations were false and baseless. जो आरोप थे वो क्या थे झूठे और बेस रहित मतलब उनका कोई बेस नहीं था और वो झूठे थे. नेक्स्ट वर्ड इज deduce. Next word is deduce. Synonyms are for this word conclude, infer, reason. Hindi meaning for this word is निष्कर्ष निकालना. Use in sentence we can deduce the answer from the clues. We can deduct the answer. हम आंसर्स को डिडक्ट कर मतलब आंसर्स हैं उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं फ्रॉम द क्लूज. क्लूज होते हैं राय. नेक्स्ट वर्ड इज this. Next word is discerns. And synonyms are for this word perceive, recognize, distinguish. And Hindi meaning for this word is पहचानना. Use in sentence she could discerns the truth from the lies. Next word is foliage. Next word is foliage. Synonyms are leaves, greenery, vegetation. Synonyms are leaves, greenery, vegetation. Hindi meaning for this word is पत्तियां. Use in sentence the thick foliage block the sunlight. जो thick foliage है जो leaves है मतलब जो थिक मोटी सी जो पत्ती है उसने क्या है सनलाइट को रोक दिया. ब्लॉक होता है मतलब रोकना, स्टॉप करना, बैन करना. नेक्स्ट वर्ड इज fended off.
Synonyms are defended, avoided, repelled. Synonyms are for this word defended, avoided, repelled. Hindi meaning for this word is टाल दिया, बचाव किया. Use in sentence. क्या है? He fended off the attacker bravely. And next word is insight. Next word is insight. Synonyms are understanding, perception, awareness. Understanding, perception, awareness. Hindi meaning for this word समझ या अंतर्दृष्टि. Use in sentence. Insight. Her insight into the problem was helpful. Her insight into the problem was helpful. Next word is intimately. Next word is intimately, and synonyms are closely, deeply, personally. And Hindi meaning for this is घनिष्ठ रूप से. And use in sentence, they knew each other intimately. वो मतलब एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानते थे. Next word is flawless. Next word is flawless. Synonyms are perfect, without error, immaculate. Next word, Hindi meaning for this word is those he use in sentence. Her performance was absolutely flawless. Next word is destined. Next word is chastened. Next word is chastened, and synonyms are humbled, corrected, disciplined, felt sorry. Are humbled, corrected, disciplined, felt sorry. And use in sentence, he felt chastened after the failure. तो उसमें क्या था? ही फेल्ट चेस्टन आफ्टर द फेल्योर, मतलब फेल्योर के बाद उसने क्या किया? अनुशासित, मतलब असफल होने के बाद उसने क्या महसूस किया? अनुशासित महसूस किया. नेक्स्ट वर्ड इज कंसिल. कंसिल. Synonyms are advice, guidance, suggestion, and Hindi for this word is salah. Use in sentence. The teacher offered wise counsel. तो टीचर है उसने ऑफर किया वाइज, जो सलाह है मतलब बुद्धिमता जो सलाह है वो क्या की? ऑफर की, पेश. नेक्स्ट वर्ड इज बी. नेक्स्ट वर्ड इज beacon. And synonyms for this word are signal, guide, light. And Hindi में for this word is प्रकाश स्तंभ, मार्गदर्शक. And use in sentence, the lighthouse served as a beacon of hope. And use in sentence, the lighthouse served as a beacon of hope. जो लाइट हाउस है वो सर्व करता है, मतलब काम करता है एज अ बीकन ऑफ होप, मतलब आशाओं का जो मार्गदर्शक है उसके रूप में जो लाइट हाउस है वो सर्व करता है. नेक्स्ट वर्ड इज adorned. Next word is adorned. And for this word are decorated, embellished, and beautified. Synonyms are decorated, embellished, and beautified. And use in sentence is the room was beautifully adorned, the flowers and lights. And next word is next word is tapestry. Tapestries. तो क्या है ये? जो टेप्स्ट्रीज हैं के लिए सिनोनिम्स हैं वॉल हैंगिंग, woven artwork, fabric art. The word is tapestry, tape, and synonyms are wall hanging, woven artwork, fabric art. And Hindi meaning for this word is कढ़ाईदार दीवार की चादरें या सजावटी कपड़ा. Use in sentence, the castle walls were covered
with ancient tapestries. Next word is resolute. Next word is resolute, and synonym for this word are determined, steadfast, unwavering. And synonyms are determined, steadfast, unwavering, and Hindi meaning for this word is dard nishchay, and used in sentence. She remained resolute in her decision despite all objections. She remained resolute मतलब वो क्या है, दृढ़ निश्चय रही इन हर डिसीजन, अपने निर्णय में, डेस्पाइट ऑल ऑब्जेक्शन, हर मतलब सभी ऑब्जेक्शंस के बावजूद वो क्या है, अपने डिसीजन पर दृढ़ निश्चय रही. नेक्स्ट वर्ड इज bustling. Next word is bustling, and synonyms are lively, crowded, busy. And Hindi meaning for this word is चहल पहल वाला या व्यस्त. चहल पहल वाला या व्यस्त. Synonyms are the market was bustling with shoppers. द मार्केट वॉज बस्लिंग मतलब जो मार्केट था वो क्या था, व्यस्त था, विद द शॉपर. नेक्स्ट वर्ड इज eludes. Next word is eludes. Synonyms are escapes, avoids, slips away और get away भी बोल सकते हैं. Get away. हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज नहीं पकड़ में आना या बच निकलना. Use in sentence, the answer still eludes me even after hours of thinking. The answer still eludes. मतलब जो आंसर है वो अभी भी पकड़ में नहीं आया मुझे, मतलब घंटों के सोच के बाद भी. नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइस. नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइस, एंड सिनोनिम्स invent, plan, formulate. And and Hindi meaning for this word is योजना बनाना या तैयार करना. यूज इन सेंटेंस, राम शुड डिवाइज अ स्ट्रेटजी टू विन द मैच. तो राम ने क्या है, एक मतलब या राम को एक योजना बनानी मतलब चाहिए, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, डिवाइस योजना तैयार करनी चाहिए, मतलब मैच को जीतने. Next is deliberate. Next is deliberate. Names are intentional, planned, and purposeful. Intentional, planned, and purposeful. Hindi meaning जानबूझकर. And used in sentence, his actions were deliberate, not accidental. Next word is next word है जो है वो टी नाइस. नाइस. Scrutinize के लिए जो synonyms are examine, inspect, study closely. Examine, inspect, study closely and use in sentence. सॉरी उससे पहले हम इसका जो हिंदी मीनिंग वो बताएंगे. बारीकी से जांचना. मीनिंग है बारीकी से जांचना. यूज इन sentences, प्लीज scrutinize the documents before signing it. And the next word is in haste. haste. इन haste के लिए जो synonyms हैं, synonyms for in haste, hurriedly, quickly और rashly. and rashly हिंदी मीनिंग जल्दबाजी में. जो हमारा हिंदी मीनिंग है वो है जल्दबाजी में. यूज इन सेंटेंस, he left the room in haste without saying a word. उसने जो रूम है वो जल्दबाजी में छोड़ा बिना कुछ वर्ड कहे. And next word is pursued. Next word is pursued. And names are chased, followed, shot. Hindi meaning for this word is पीछा करना या कोशिश करना. In sentence, the police pursued the thief through the alley. Next word is countenance. Countenance.
Synonyms are facial expression, appearance, look. Appearance and look. हिंदी मीनिंग चेहरा, हाव भाव, चेहरा भाव या हाव भाव, एंड यूज इन सेंटेंस हर काम, countenance, he assured everyone. Next word is distressed. Next word is distressed. Synonyms for this word are upset, troubled, worried. And used in sentence, she looked distressed after receiving the bad news. मतलब वो कैसे डिस्ट्रेस, परेशान सी दिखी जो बैड न्यूज है वो प्राप्त करने के बाद. एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज चिंतित या दुखी. नेक्स्ट वर्ड इज astray. Astray. And synonyms for this word is lost, misled, away from the correct path. Are lost, misled, away from the correct path, and use in sentence the child went astray in the crowded fair. Child था वो क्या था, गलत रास्ते पर चला गया इन द क्राउडेड फेयर, भीड़ भाड़ वाले मेले के अंदर. और जो एस्ट्रे है, एस्ट्रे के लिए जो हिंदी है वो भटक जाना या गलत रास्ते पर जाना. नेक्स्ट वर्ड इज indignant. Indignant are angry, offended, outraged. एंड हिंदी मीनिंग फॉर दिस वर्ड इज आक्रोशित या क्रोधित. और किस पे आक्रोशित या क्रोधित? न्याय के ऊपर. और यूज इन सेंटेंस ही वॉज indignant at the unfair treatment. नेक्स्ट वर्ड इज जैसे yonder. For this word is over there, at a distance. The meaning for this is वहाँ या दूर. और use in sentence look at the house yonder the hill. मतलब जो हाउस की वहाँ की ओर देखिए, the hill पहाड़ी के ऊपर. नेक्स्ट वर्ड इज साउंड. नेक्स्ट वर्ड इज साउंड एंड सिनोनिम फॉर दिस वर्ड हेल्दी, सेंसिबल, रिलिएबल. और यहाँ पे है जो मीनिंग स्वस्थ, सही या स्वस्थ. यूज इन सेंटेंस दैट्स अ साउंड आइडिया. ये एक जो सही है आइडिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.